Hello, good morning everyone. Very warm welcome to BabyCode free TOEFL sessions. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TOEFL and TESOL certified trainer. I'm back with my live session 9. Right, हम अपना listening module cover कर रहे हैं. And in this listening module, we are covering up our questions. The first part of question we have already done. Part 1 we have already done yesterday, and that was about, just give me a second. Yes, so we have already done just content and just purpose questions. हमने last session में करे थे अपने. Now we are doing our second topic, that is detailed question. Detailed questions क्या होते हैं listening module के? So the candidate, those who are watching this session for the first time, please go back. हमने reading module cover कर दिया है already. All those 7 sessions are for the reading module. Yesterday we have done started with listening part and we have covered just content and just purpose question. आज हम कर रहे हैं detailed questions. So what are detailed questions? Detailed questions क्या होते हैं? Detailed questions ये बहुत ज़्यादा straight forward questions होते हैं listening के question types में. There are 8 types of question in your listening module और ये सबसे ज़्यादा straight forward होते हैं because यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है कि आप कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स को याद कर सकते हो कि नहीं अपने लेक्चर में. जो भी कन्वर्सेशन आपने सुनी है, यू रिमेम्बर द स्पेसिफिक फैक्ट्स और नॉट. सो डिटेल क्वेश्चन किस लिए होता है? ये स्पेसिफिकली किसके लिए होता है? स्पेसिफिक फैक्ट से रिलेटेड होता है, डिटेल, राइट. सो आप इन क्वेश्चंस को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? क्योंकि इसमें फ्रेजेस दिए होते हैं और वो फ्रेजेस कौन से होते हैं? अकॉर्डिंग टू, व्हाट इज. सो यू शुड रिमेम्बर, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज कैसे करना है? इन वर्ड्स के थ्रू, इन फ्रेजेस के थ्रू, अकॉर्डिंग टू एंड व्हाट इज. डिटेल क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जाता है? इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल डिटेल्स पूछी जाती है. यू विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज एनी काइंड ऑफ ट्रैवल डिटेल्स. आपको कोई ट्रैवल डिटेल्स को नहीं मेमोराइज करना कि कुछ भी 1977 में ये हुआ हो या 1978 में ये हुआ हो, राइट. तो यहाँ पे आपसे कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे पूछी जाती है. दैट मीन्स जब आप सुन रहे हो अपनी ऑडियो को, यू हैव टू रिमेम्बर दैट. और आंसर जो होता है डिटेल क्वेश्चन का, वो ऑलवेज क्या होता है? एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होता है. दैट मीन्स प्रिसाइजली आपको वो मिलेगा लिसनिंग कन्वर्सेशन में और लेक्चर में. लेकिन आपको रिकॉग्नाइज कैसे करना है इस क्वेश्चन को? अपने फ्रेजेस के साथ, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज, राइट. सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है. नेक्स्ट थिंग इज कि डिटेल क्वेश्चंस ये दे आर सिमिलर. ये किसकी तरह इक्विवेलेंट होते हैं? फैक्चुअल क्वेश्चंस की तरह, जो हमने रीडिंग सेक्शन में करे थे. जैसे वो फैक्ट्स के साथ डील करते हैं, राइट. फैक्चुअल क्वेश्चन में फैक्ट्स के साथ डीलिंग होती है. सो यहाँ पे भी डीलिंग स्पेसिफिक फैक्ट्स के साथ होती है लिसनिंग सेक्शन, बट दे आर नॉट यूजुअली एज स्पेसिफिक एज डिटेल क्वेश्चन. बट वो उतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, राइट. दे आर नॉट that specific as detailed questions in the this reading section. So because you do not have option of listening to a recording a second time, you will depend on the information that you wrote in your notes. So most important thing is कि आपको दोबारा टाइम नहीं मिलने वाला सुनने के लिए. You will only get a chance to listen to the audio once. आप एक ही बार ऑडियो को सुन सकते हो. So it's better कि आप क्या करो, जब you are listening to the audio, make your notes बनाओ. For this reason, detailed questions listening section में rarely deal किसके साथ करते हैं? Specific information के साथ, like numbers or name. Instead, they focus on those facts that you would recognize as important as listen to the recording. So detailed questions are usually in harmony with the main idea of recording. That means detail, conception details के साथ, मेन आइडिया के साथ लिंक्ड होते हैं. सो जब आप फाइनल आंसर मार्क करोगे, अपने मेन आइडिया को रिविजिट करो रिकॉर्डिंग में कि आपने क्या सुना था, और मेक श्योर आप उस चॉइस को आंसर करो जिसमें मेन आइडिया कंसिडर किया गया, राइट. सो एज यू चूज योर आंसर चॉइस, जैसे ही आप अपने आप आंसर को चूज करोगे, बी केयरफुल कि आप फॉल्स फ्रेंड्स जैसे कि डिस्ट्रैक्टर्स में ना चले जाओ.
फॉल्स फ्रेंड्स आर आंसर चॉइसेस, वो आंसर चॉइसेस होती है जिसमें कीवर्ड्स तो होते हैं जो लिखते भी हैं कि दे आर करेक्ट, बट वो करेक्ट नहीं होते, वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन से, राइट, और दे डोंट मेक एनी सेंस. सो डिटेल क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड फॉलोइंग अ लेक्चर. इसमें लेक्चर होता है. समटाइम्स दे आर फॉलोइंग कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन भी होती है. द क्वेश्चन आस्क कि व्हाई अ माइनर डिटेल इज मेंशन इन द टॉक. पूछा जाता है कि व्हाई दिस थिंग इज, और डिटेल, दिस डिटेल इज ऑफन एन एग्जाम्पल प्रोवाइडेड इन द लेक्चर. और ये जो डिटेल होगी ना, ये एक एग्जाम्पल की तरह प्रोवाइड होती है लेक्चर में. ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी होती है बिकॉज आपसे कोई भी डिटेल पूछी जा सकती है, इवन माइनर डिटेल क्यों ना हो वो लिसनिंग ऑडियो की आपकी. सो यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर है. टफ भी है बिकॉज स्मॉल डिटेल हो सकती है लिसनिंग की, बट विद इनफ प्रैक्टिस अगर आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करते हो सो आप इसको हेयर भी आराम से कर सकते हो अपनी एबिलिटी को, और नोट डाउन कर सकते हो ईच डिटेल को इफेक्टिवली, राइट. आपको यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल के लिए अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनना होता है, अनलेस यूजुअली आपको क्या करना है, डिटेल क्वेश्चंस जो भी लेक्चर में होते हैं और समटाइम्स कोई कन्वर्सेशन होती है तो आप डिटेल्स को सुनो कि वो इंक्लूडेड है नहीं इंक्लूड, क्या चीज इंक्लूड है उसमें, राइट. Let's do one exercise. So look at the question. I'm going to play a recording. You have to listen to the recording and then you have to answer this question. Listen to a conversation between a student and an administrator at the university's finance office. Hi there. Can I help you? I really hope you can. I'm worried I'm just really worried I'm going to be in trouble. Oh? Well, don't panic. Just relax. I'm sure we can deal with whatever's going on. What's the issue? Well, I've received 2 separate statements about my tuition payments in the last week, and they seem to... It looks like they kind of contradict each other. Uh-huh. I've been a student here for 2 years, and I've never gotten any notice like this before. The language seems a little threatening, and I'm afraid that if I don't figure this out, I'll be kicked out of classes or something. I can assure you that nobody's going to kick you out of class. We'll sort it out. Now, did you bring the letters with you? Yep, I have them right here. The first one is similar to the reminder I get every month to make a payment, but Here, let me see. it has some extra language out of the norm. There, at the bottom. It says something about penalty payments. All right. And did you miss any payments that you know of? No, I've never missed one. That's strange. And what about the second notice you received? That one says it's the final warning to make a payment, or else my enrollment will be canceled. That doesn't make any sense because it's the first warning I ever got. Okay, are you sure these are the only 2 notices you got in the mail from us? Yeah, absolutely. Well, then, it certainly seems like there's been an error, because if the statement were accurate, you would have received additional notices from us. Let me just look up your account in our database and see what the problem is. Thank you so much. I'm just a little stressed out that something will go wrong with my classes. Oh, sure. Just a moment while I... Huh, here we go. I think I found the problem. Did you make your last payment during a school holiday? Sure, I mean, I think I did. I guess I made the payment during spring break. Is that a problem? Well, you didn't do anything wrong, but it looks like there was an error in our system. The computer is supposed to automatically process payments when the offices are closed, but for some reason, your payment never went all the way through. It's still pending approval. So why did I get only a final warning notice? Well, I'm not completely sure, to be honest. We were coming back from a holiday, so there may have been some confusion. Well then, I mean, what do I have to do to fix this? Nothing at all. I'm approving the payment now and noting on your account that the error was ours. Just make your next payment on time and you won't have any more problems. Wonderful. Thanks for taking care of this.
That's a huge relief. So now you have to answer this question that what problem does the student have? कि student की क्या problem थी, right? Make sure you understand the example of a false friend. False friend basically a distractor. So you have heard, आपने पूरी conversation सुनी. So what do you think? What problem does the student have? Student की क्या problem थी? So the correct answer is he received a notice that his payment was late, right? उसकी problem क्या थी कि उसकी payment क्या हो गई थी, late हो गई थी. Now why we have selected, क्यों हमने ये answer को select करा है? See this. An explanation is already given. Now what you need to know is, देखो, why did student go to the office? क्यों गया था? At first उन्होंने specifically नहीं बताया. They only says that कि वो afraid था, trouble में था, and then he gives more detail. फिर detail दी कि उसने 2 separate statement receive करे हैं about his tuition payments in the last week. और it seems like kind of a कि वो contradict कर रहे each other. इस point पे we know कि student की problem क्या थी, उसके payment से related. But actual problem clear नहीं है. जब मोर इन्फॉर्मेशन बताई गई 2 स्टेटमेंट्स के बारे में कि वार्निंग थी उसकी ट्यूशन फीस से रिलेटेड, सो आंसर चॉइस क्या हुई? बी हुई. Why A is incorrect? Because A is like student didn't get any extra statement. He got 2 instead of 1. ना student ना administrator कोई भी, there was nothing for that another statement. C is almost true but not quite. क्यों? क्योंकि student ने try to send the payment during holiday. उसने try करा था but work नहीं करा था, so that is different. D option, again this is not right because student is only afraid of being barred from the classes, किसको classes से निकालना दिया जाए. So woman tells him that उसे नहीं निकाला जाएगा, he won't be kicked out of the class, right? So you have to select your option very carefully. आपको detail के लिए जाना है. Think about the detail, listen to the conversation very carefully. Now let's do this one. I'm going to play an audio and you have to listen it very carefully. If you recall, I had said that at some point during this semester, I wanted you to attend an exhibit at the Ferry Street Gallery and subsequently write a paper about it. The exhibit is on currently and will be at the gallery for the next month, so I want to give you the details of this next assignment. The exhibiting artist's name is Rose Franson. She's a pretty young artist, so you might not have heard of her before. Her style, which she calls realistic impressionism, is rather unusual and different in comparison to the styles we've studied so far. You should have studied both the realism and impressionism movements separately in art history, so can someone please summarize each of these styles? Surfacing in the late 19th century, the Impressionism movement differs greatly from the styles that preceded it, in that the subjects and scenes don't reflect a fully realistic or exact model of real life. Painters of the Impressionist style generally created works on canvas that had rough textures by using thick paint and large brush strokes. Okay, and what did the subject matter consist of? Impressionist artists opted to paint scenes depicting everyday life, such as people living, walking, sitting in the cafe, and nature scenes, particularly landscapes. Right. So, when you go to the exhibit, you'll see a painting as soon as you enter, and I ask that you examine it closely. It really emphasizes the Impressionist side of Franzen's style, with the broad brushstrokes and blurry lines depicting an everyday outdoor scene. With the sky painted pinkish yellow and the fence blue, the colors are kind of unrealistic. You're left with an impression of a chilly, bleak winter's day on a farm. Also, an interesting note about Franson, she lived abroad for a while, and when she moved back to Iowa, she would frequent the sales barn, a place where local farmers sold their cattle and farm animals, among other places like dance halls and the like, to watch how people moved, stood still,
and what their different postures looked like. She did this because it helped her understand how bodies move, so she could be a better artist. So now you have heard this audio. Look at the question. Look at this question, that what does the professor point about Fanny's farm scene painting, right? So क्या point out किया था कि it looks like a photograph, कि वो photograph की तरह लगती है, या वो well known painting है, या painted है in a very impressionist style, या फिर painted है it like while she was living abroad तब paint हुई थी. So you have to look for the detail. आपको detail में conversation को listen करके ये ध्यान रखना है और साथ साथ notes भी बनाने हैं that they focused on impressionist style, क्योंकि वो क्या थी, फ्रेंडजन ने पेंट करी थी in a very impressionist style, right? Now what major tip how to practice this TOEFL listening, कैसे आप practice कर सकते हो? First thing is कि आप एक study schedule बनाओ अपना, राइट? कि आज मुझे रीडिंग के सेशन 1 करने हैं, रीडिंग का टॉपिक 2 करना है, या लिसनिंग का टॉपिक 1 टॉपिक 2 करना है. मेक योर आईज योर एनिमी. नाउ यू हैव टू लिसन. कन्वर्सेशन को आपको सुनना है तो बहुत कंसंट्रेशन चाहिए आपको यहाँ पे. बिकम अ नोट टेकिंग प्रो. साइमल्टेनियसली नोट्स बनाओ. दिस इज वेरी एडवांटेजेस अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, डिटेल्स लिखी होंगी. मेमोराइज कर लो क्वेश्चन टाइप्स को कि सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, देन सेकंड कौन सा है, डिटेल है, जस्ट पर्पस है या कंटेंट है. पैसेज के स्ट्रक्चर को पढ़ो, जैसे कि एक प्रोफेसर को स्ट्रक्चर पता होता है वैसे ही स्ट्रक्चर को पढ़ो. वोकैबुलरी लेस, फोकस ऑन वोकैबुलरी लेस एंड स्टोरी ज्यादा पे फोकस करो. एक्टिव लिसनर बनो कि आपको एक्टिवली अपनी ऑडियो को सुनना है. थिंक लाइक अ नॉर्थ अमेरिकन टीचर. जब टीचर्स पढ़ाते हैं या टीचर्स सोचते हैं, वो हर क्वेश्चन का आंसर सोचना स्टार्ट कर देते हैं, व्हाई, व्हाट, हाउ, कि ये कैसे हुआ, राइट? ट्रैक योर स्टडी प्रोग्रेस. अपनी स्टडी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो. 1 वीक में आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, सेकेंड वीक में कितनी इंप्रूव हुई. एंड डोंट पैनिक, राइट? सो फोकस ऑन दिस स्ट्रैटेजी. इन टिप्स के साथ यू कैन गेट योर स्कोर्स वेरी इजीली. So go to the BabyCode application and YouTube to watch our live sessions. सारे वहाँ पे uploaded है, right? And keep practicing and keep learning for all those sessions. And very soon I'm going to make a new session for you. So don't miss out. Start practicing your TOEFL listening. Second part, which is about detailed questions. Okay then, thank you so much. Bye-bye.